Assalamualaikum students. Today in the course of Research Method in Psychology 1, we will study the concept, construct and variable. Concept and construct. Concept. The term concept is used to refer to things, to events and to relationship among things or events and as well as to their characteristics. So concept can be anything. It can be related to anything, any object, any person, situation, event, relationship, organization, even you have the concept related to the entire world. So whenever we talk about the concept, it means we are talking about a variety of things. You have a variety of concepts in your mind. You have a concept of one thing and its associated feature and characteristics. तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये बेसिकली हर चीज से किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है. कॉन्क्रीट चीजें भी होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर भी होती हैं. तो हर तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जहन में एक आइडिया होता है. आप उस चीज के बारे में ख्याल करते हैं और उसको देखते हैं. ये इस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. A concept is an abstract tag that typifies an aspect of reality. So the concept you are having related to something, it will be a reality. But abstract a concept is basically an abstract tag. वो टैग किस पे लगा होता है, वो किस चीज को के बारे में बता रहा होता है. वो बेसिकली एक रियलिटी के बारे में बता रहा है कि यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, यू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ वन थिंग. लेकिन वो उस रियलिटी से रिलेटेड जितनी चीजें होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर आपके जहन में उससे रिलेटेड एक आइडिया मौजूद है, एक ख्याल मौजूद है. Formally and logically developed ideas about classes of phenomena that a researcher seeks to study, the building blocks of theory expressed as a symbol or in the world. So concept is basically expression of a theory and it is expressed in the form of symbol or words. So whenever you talk about something, you either express them in your words or you can present the sign or symbol through which we can identify what a person is going to say and what person has in his or her mind. So these concepts are formally and logically developed ideas. Whenever and these ideas and words basically serve as building blocks of a theory. So you can understand with the a theory, a theoretical concept with the help of logically framed ideas. तो ये बेसिक सिंबल की फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में या इस तरह भी आप एक कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया जाता है. उस थ्योरी की बिल्डिंग ब्लॉक, थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में जो है वो हेल्प मिलती है. Researchers begin with the concept and most theory builds around the concept. So research is initiated with the concept that is operationally defined later on by the researcher, and theories are also depend on the concepts, because without concept researcher even cannot develop a theory related to something. तो theories building में भी इसका रोल है. रिसर्च भी इस कॉन्सेप्ट के बगैर नहीं चल सकती है. कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे तो ही रिसर्चर जो है वो एक अच्छी थ्योरी को सामने ला सकता है, तो अच्छी रिसर्च को सामने ला सकता है. Constructs researcher need to conceptualize the concepts in order to make it measurable and testable. So researcher, in order to do a scientific study, first need to logically define or describe the ideas, and he or she will have to conceptualize the thing so that researcher can test it and measure it using standard procedures set to do a scientific study. तो कंस्ट्रक्ट बेसिकली ज़रूरी है रिसर्च के लिए, लेकिन रिसर्चर को इसे प्रॉपर वे में कंसेप्चुलाइज करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रिसर्चर इसको प्रॉपरली लॉजिकल वे में और फॉर्मल वे में इसको डिफाइन नहीं करेगा, डिस्क्राइब नहीं करेगा, till then researcher will not be able to measure it.
Constructs are the expression of ideas related to the events, object, things, organization, or people researchers are interested in. So construct can be related to anything, and researcher will express his or her idea related to anything, any object. सपोज अगर रिसर्चर स्टूडेंट्स एटीट्यूड के हवाले से उसके पास कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो रिसर्चर फर्स्ट हैज टू एक्सप्रेस इट. So the way researcher express that idea, it is referred to as construct. तो वो किसी भी चीज से रिलेटेड होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी हो सकती है, पर्सन की परफॉर्मेंस भी हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इवेंट है, कोई सर्कमस्टांसेस हैं, कोई एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ भी ऐसी चीज है कि जो मेजरेबल है, टेस्टेबल है, तो वो रिसर्चर जो है उसको एज ए कंस्ट्रक्ट यूज करेगा. Constructs are a way of bringing theory down to earth, helping to explain the different components of theories as well as measure observed behavior. So construct help a researcher or help anyone in understanding and comprehending the theory or along with its different component, different dimension. Even with the help of construct, we can understand the complicated situation and complicated concepts. So researcher इस theory की, इस construct की help से theory को बहुत डिटेल में understand कर सकते. theory बहुत उस पे easier होकर हमारे सामने आती है और उसको इस तरह जो है वो construct जो है वो उसे easy बनाकर हमारे सामने present करते हैं. And as well as construct are used to be measured and observed during used to measure and observe the human behavior as well. कि कोई भी construct आपके पास है तो आप human behavior को study करने के लिए भी कह सकते हैं कि suppose stubborn behavior एक है और इसी तरीके से social intelligence है person की, you can study that specific domain and in order to understand human personality. तो ये different constructs हैं, different types के हैं जिनको आप consider करते हुए, जिनको आप study करते हुए human personality को, उसके behavior को, उसके emotions को, feelings को भी observe भी कर सकते हैं और measure भी कर सकते हैं. Constructs can be conceptually defined in that they have meaning in theoretical terms. So construct should be defined in a way that clear the meaning of something within theoretical framework. और उसकी जो theoretical way में term में हमें समझ आना चाहिए, उसका concept clear होना चाहिए कि हमें वो construct इस तरीके से हो कि proper एक डेफिनेशन हो, एक कंप्लीट डेफिनेशन हो जिससे हमें उसका एक थ्योरेटिकल एंगल उसका समझ आ सके. Some constructs can be very easy to understand, measure, while some constructs are more difficult and complex. So, not in all situations you can easily measure or understand or test the construct. Sometimes a researcher can easily measure or test the construct, but in some situation, a researcher has to work hard to study or measure a construct due to its complicated nature. तो वो उसका बहुत difficult होता है, complicated चीज होती है, तो उसको study करने के लिए भी researcher को बहुत effort करनी होती है. Construct is an idea used in psychological theories to explain behavior or mental functioning. In the context of psychological theories and research, construct help a person in understanding human behavior, how a person is behaving in a certain way, what kind of feelings a person is having, and what kind of emotion person is exhibiting in a certain way. So a researcher can also understand and measure the mental functioning of a person. पूरा मेंटल उसका जो प्रोसेस है वो कैसे वर्क कर रहा है, पर्सन सोचता कैसे है, रीजन आउट कैसे करता है, जज कैसे करता है, इंटरप्रेट कैसे चीजों को करता है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन किस तरह की
हैं, functioning किस तरह की है. तो with the help of construct you can also understand human behavior, his personality, and as well as his mental functioning. So in psychological research, you can examine, test, and understand a variety of constructs as mentioned here. For example, intelligence, you can understand and measure the intelligence, IQ, social intelligence, emotional intelligence, moral intelligence, and so on. You can also examine fluid intelligence and crystallized intelligence as well. Your memory is also a construct that can be studied and tested during scientific research. You can also work upon depression, aggression, dream, and emotional intelligence as well. So there are so many other psychological constructs you can consider for your research in future. A variable is defined as anything that has a quantity or quality that varies. So variable is anything that vary in terms of quantity and quality as well. इसकी quantity में भी change आ सकता है, quality में भी change आ सकता है. A variable is, as the name applies, something that varies. So you can easily understand to read the name variable. Variable means varies. ये vary कर रही है चीज, इसमें वेरिएंस आ रहा है, इसमें चेंज आ रहा है. इसके नाम से जाहिर है कि ये कोई ऐसी चीज है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा जब कभी आप इसको रिसर्च में यूज करेंगे. A variable is a property that takes on different values as circumstances and situations changes. So variable can be changed in different situations and different circumstances. Its value can be changed. You can have different values if you use it, measure it in different situations under different conditions. तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि ये चेंज होता है. अगर ये चेंज ना हो तो फिर आप इसको वेरिएबल नहीं कह सकते. A variable is a characteristic, a number or a quantity that increases or decreases over time or can take on different values as opposed to a constant such as in that do not vary in different situations. So variable is a characteristic, or it can be a number or a quantity that can be increased or decreased in with the passage of time or in under some certain conditions. आपके पास different values आ सकती हैं and that value will differ from the other kind of constructs whose values remain constant in different situations. So ऐसी चीजें कि जो जिनकी वैल्यू सेम रहती है डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंस में कि आज भी है ये कल भी है ये, तो उससे ये डिफरेंट चीज होगी कि आप इसको डिफरेंट सिचुएशन में जब करेंगे वक्त के साथ तो उसकी डिफरेंट वैल्यू आपके पास आ सकती है. सपोज अ रिसर्चर स्टडी द लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन वन सेटिंग in one kind of sample, so he can get different values, and when I study the same construct on the sample or on different sample, then I can have a different kind of value of same construct. तो इसका मतलब है कि construct तो same है ना, variable तो same है, लेकिन value change हो रही है. क्यों? क्योंकि जब आप इसको different situation में different condition के साथ करेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ change आएगा, तो constant नहीं रहेगी वो चीज, इसलिए इसको variable कहा जाता है. Variable is also defined as a feature possessed by the members of a population. When a researcher selects the sample from a target population, basically his intention is to measure the feature of that population. तो वो जो उसमें members है ना, उसमें वही चीजें नजर आएंगी उस population में जिस पर्पस के लिए उस sample को लिया गया है. तो variable क्या करेगा? Variable will basically measure those features possessed by the sample or research participants selected from the target population.
तो वहाँ उसमें वो फीचर्स होंगे। तो वेरिएबल को आप इस सेंस में भी डिफाइन करेंगे कि वो पॉपुलेशन के वो जो मेंबर्स हैं, जो सैंपल आपने सेलेक्ट किया उसमें जो फीचर्स नजर आ रहे हैं, बेसिकली दैट इज द वेरिएबल. It is something that varies or changes in value according to a situation and how it's treated. So it's up to the researcher how he or she treats a variable in his study. अब वहाँ पर ये वैल्यू चेंज होगी, वेरी करेगी, इसमें जो चेंजेस आएंगी, बट दीज चेंजेस विल बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और कंडीशन रिसर्चर has used in his study. तो जिस तरह रिसर्चर्स को करेगा वैसे ही उसमें चेंजेस आएंगे. कि सपोज एक रिसर्चर है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इफ ही इंक्रीज द level of noise in order to see its impact on the students' behavior, students' attention or concentration, then the variance will be noted in the students' concentration due to the increase of noise. तो यहाँ पर जब रिसर्चर ने नॉइज को एक वेरिएबल को वो किया तो उससे फिर दूसरे में चेंज होना शुरू हुआ है, तो वो उसकी क्वांटिटी क्वालिटी वेरी करती है. Variables are also defined as the condition or characteristics that the experimenter manipulates, controls, or observes. So, variable can also be manipulated by the experimental researcher during the study. So, you can define the variable in the light of the condition and characteristics the researcher used to do during his study. So, researcher manipulated can increase or decrease the amount and quality of the variable in order to see its impact on another variable. So, researcher can have control over the variable in order to observe it. तो वो उसकी ऑब्जर्वेशन, उस कंट्रोल और मैनिपुलेशन जो है वो उसको भी लेकर आप वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं कि किन कंडीशन में इसको किस तरह मैनिपुलेट किया गया, किस तरह कंट्रोल किया गया, किस तरह इसको ऑब्जर्व किया गया. Variable is the main ingredient and basis of our research. Variable is very, very important and essential part of our research. Research is based upon the type of variable you have selected for the study. So, without variable, there will be no research. If you have not selected a variable, you cannot do any kind of research, because all type of research requires variable to be tested and measured. क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल है आप उस कंस्ट्रक्ट के तौर पे इसको ले रहे हैं, जब तक आप उसको मेजर नहीं करेंगे तो आपने स्टडी में क्या किया, तो फिर स्टडी तो हुई नहीं ना. तो इसके बगैर तो स्टडी चल ही नहीं सकती. इसका तो स्टार्ट ही वेरिएबल से है. वेरिएबल आपके पास नहीं है, कोई कंस्ट्रक्ट नहीं है, आपने इसको डिफाइन करना है, तो हाउ कैन यू कैरी आउट रिसर्च. तो रिसर्च इसके बगैर नहीं चलती है. तो रिसर्च अगर वेरिएबल नहीं है तो इट्स मीन यू हैव नथिंग इन योर हैंड टू डू. Types of variable, there are more than one variables you can study for a scientific research. First one is independent variable. The variable that is manipulated by the experimenter is referred to as independent variable. So this kind of variable is manipulated by the researcher during the study in order to see its impact on the dependent or outcome variable. Researcher can increase or decrease the amount and quality of independent variable. This variable can be treated by the researcher under different conditions. तो जैसे मेडिकल की फील्ड में भी होता है कि डॉक्टर्स एक मेडिसिन की इम्पैक्ट देखना चाहते हैं, उसकी एफिकेसी देखना चाहते हैं कि स्पेसिफिक डिजीज को टारगेट करने के लिए कोई न्यू मेडिसिन है या ऑलरेडी जो मेडिसिन थी उसको किसी एक नए प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए यूज किया जा रहा है. तो रिसर्चर फिर क्या करते हैं, उसके डोज को कम ज्यादा करते हैं, अपनी मर्जी से उसको जो है वो पेशेंट को देंगे. तो ये क्या है, ये मैनिपुलेशन होती है. इसी तरह अगर क्लास में अगर रिसर्चर जो है he or she wants to examine the impact of noise on students' concentration, then his researcher will increase or decrease the noise in the class so that he could observe the changes occurring in the students' behavior. तो ये रिसर्चर के हाथ में होता है कि रिसर्चर इसे मैनिपुलेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करने के लिए. इट कैन नॉट बी चेंज बाय एनी अदर वेरिएबल ड्यूरिंग अ स्टडी. सो it
may bring change in another variable, but dependent variable or outcome variable cannot bring any kind of change in the dependent variable. ये इसमें difference है. The second is dependent variable. A dependent variable relies on and can be changed by other components. So, dependent variable is treated as the outcome variable, and the observation or variance in dependent variable will be the a result of independent variable manipulated by the researcher, investigator during the study. तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो दूसरों पे डिपेंड करता है. मतलब इसमें जो चेंज आ रहा है ना, दैट इज ड्यू टू द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो दूसरे पर ये डिपेंड कर रहा है. इसमें किसी किस्म के जो वेरिएंस आएंगे इसमें आएगा या इसके कंपोनेंट में आएगा. Dependent variable can be treated as an outcome variable and effect in the study. So sometimes researcher conduct a cause and effect type of study in which they see the impact of something on another variable. कि जैसे एक cause है एक effect है, तो वो effect के तौर पर जो चीज यूज होगी वो dependent variable होगा. Cause will be something else और उस cause का impact जो है effect पे होगा. तो effect के तौर पे किया जाता है और researcher may use it as an outcome variable. कि आउटकम है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जब चेंज लेकर आएगा इस आउटकम वेरिएबल में, तो इस आउटकम वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में जो वेरिएंस आएगा दैट विल बी ड्यू टू अनदर वेरिएबल. Number 3, mediator variable. A mediator variable is a variable that plays an intervening role in the association between two variables. In some researches, investigator wants to examine the relationship between two variables, and he also studies the intervening role of a third variable that is referred to as mediator variable. So mediator variable explain the relationship between two variables. इसका intervening role है, वो दाखलत करता है, interference करता है. जैसे दो वेरिएबल है उनमें एसोसिएशन तो है, but that association is a result of the third variable. तो इसको mediator variable है. It explains the relationship occur between two main variable during a study. So researchers have studied two main variable, but the third variable is interfering in between two variables. Then then this variable, mediator variable, third variable will explain the relationship. कि वो जो दो वेरिएबल में रिलेशनशिप आया है वो क्यों आया है, किस वजह से आया है. mediator variable will explain that. Suppose स्टूडेंट्स मोटिवेशन है और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है एक टेस्ट पर और स्टूडेंट्स के स्कोर्स हैं. अब टेस्ट स्कोर्स है और स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उन दोनों में एक रिलेशनशिप आया है. जैसे टेस्ट है, टेस्ट के आइटम्स हैं, सपोज वो आइटम्स कितना जो है वो इजीली हो जाते हैं, डिफिकल्ट है, क्या है, तो उसकी एसोसिएशन है परफॉर्मेंस पे. तो जितना अच्छा वो टेस्ट होगा स्टूडेंट की जो है वो स्कोर्स उतना ही ज्यादा होंगे, अचीवमेंट स्कोर उतना ही ज्यादा होंगे. इन दोनों में रिसर्चर ने रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लिया. लेकिन यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल मेडिएटिव वेरिएबल रोल प्ले कर रहा है, दैट इज स्टूडेंट मोटिवेशन. Students who are highly motivated to complete a task, to do a test or to complete a test, then they will score more on achievement scale. तो ये इस तरह का रिलेशन आता है कि वो स्टूडेंट जो मोटिवेटेड होंगे करने के लिए उन्हीं की परफॉर्मेंस आपके सामने आएगी, बट वो स्टूडेंट्स जो एक टेस्ट करने के लिए मोटिवेटेड नहीं है तो उनके अचीवमेंट स्कोर भी लो होंगे. तो उन दोनों में जो एक रिलेशनशिप ऑब्जर्व किया गया है उसमें जो थर्ड वेरिएबल रोल प्ले कर रहा है दैट इज स्टूडेंट मोटिवेशन. तो वो जो स्टूडेंट मोटिवेशन है दैट विल बी रेफर्ड टू एज मेडिएटर वेरिएबल. तो ये मेडिएटर वेरिएबल इसका इंटरवेनिंग रोल प्ले करते हैं. तो रिसर्चर इसको भी एग्जामिन कर सकते हैं. Then moderator variable. A moderator variable is a variable that also plays an intervening role in the association between two variables. So here moderator variable will also interfere between two variables, two main variables being studied by the researcher. उनके दरमियान जो association होगी moderator variable भी इसमें intervening role play करेगा. But here moderator variable will serve two functions. The first, it explains the relations between two main variable. So the first function of moderator variable is to explain the association occur between two main variables
वेरिएबल, जो दो मेन वेरिएबल हैं उनको जो स्टडी किया गया, इसमें जो रिलेशनशिप आया है उसमें भी थर्ड वेरिएबल का रोल है जो मॉडरेटर वेरिएबल का है. The second function of moderator variable is that it tells the direction and strength of existing relationship between two variables. Moderator variable not only explains the relationship between two variables, but it also tells the direction and strength of that relationship. It will explain in which direction the relationship has been observed, or to what extent the relationship is strong between as observed between two main variables. तो वो उसकी strength को भी बताएगा कि whether the obtained relationship is strong or weak or moderate. तो वो उसकी तीन तरह की चीजें बताएगा कि वीक है तो भी बताएगा, मॉडरेट रिलेशनशिप है या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो भी बताएगा, और किस डायरेक्शन में है कि ये भी आपको मॉडरेटर वेरिएबल जो है वो बताएगा. Now, extraneous variable may affect the dependent variable, but the researcher usually does not consider these variables at the time of designing the study. So, extraneous variable are those variables which may confound the result of the study. These variables are present in the surrounding, but researcher actually doesn't pay attention to those extraneous variable. He or she doesn't consider it as significant that can play a role in the study. So researcher usually does not examine these variable in the study. लेकिन ये ऐसे variables होते हैं कि जो किसी न किसी तरह जो है वो स्टडी पर इनका इन्फ्लुएंस जो है वो होता है. These unwanted variable can unintentionally change or confound the study results. So they unintentionally may influence the result. Researcher does not deliberately ignore these variable, और ये कोई इस तरह नहीं है कि रिसर्चर ने जानबूझ के कोई चीज की, बल्कि ये चीजें अनइंटेंशनली जो होती है ना वो रिजल्ट को कंफाउंड करती है सराउंडिंग में है जिनकी तरफ रिसर्चर ने जिनको एज सच कंसीडर नहीं किया या जिनकी तरफ उसकी अटेंशन नहीं गई. तो ये होते तो अनवांटेड वेरिएबल है. अनवांटेड क्यों है कि रिसर्चर doesn't want to include it in the main study. तो इस वजह से ये जो है वो किसी न किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं और रिजल्ट को कंफाउंड करते हैं. जैसे सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द lecture given by a teacher and you want to see its impacts on the student attitude and students' concentration, then there will be so many extraneous variable which can confound the study or can influence the research procedure. तो अब आपको वो उन एक्सटर्नल वेरिएबल्स जो हैं वो इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है वो उस पर असर हो सकता है. कि जैसे अगर आप ये नहीं कह सकते कि स्टूडेंट टीचर का लेक्चर जितना इफेक्टिव है स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा है, तो हो सकता है कोई थर्ड वेरिएबल या कुछ ऐसे फैक्टर्स हो जो उसमें involved है. तो as a competent researcher you need to identify all those variables which may confound your study. इसलिए फिर ये कि आपको एक अच्छे रिसर्चर के तौर पर उन वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई भी करना है और फिर उन्हें कंट्रोल भी करना है. Discrete variable is also referred to as a categorical variable. It is called categorical variable because you obtain data from this in categorical form. और categorical form में data आपके पास होता है तो आपके लिए उसको काउंट करना आसान होता है. Discrete data are associated with a limited number of possible values. So discrete variable will provide you the limited number of values which can be easily counted. तो आसानी से वो आपके साथ हो जाएगी. कि लिमिटेड होती है तो आप उसको कर सकते हैं. अगर बहुत लार्ज वैल्यूज है, बहुत ज्यादा वैल्यूज है, तो फिर आपके लिए पॉसिबल नहीं होता उसको काउंट करना. Discrete variables are countable in finite amount of time. For example, one can count the money in bank account. So discrete variable आपके पास अगर है तो आप उसको एक specific time में within specific time you can count off.
count all these values. Suppose you can easily count the money in your bank account, तो वो उसको आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. कैटेगोरिकल फॉर्म में भी जो आपके पास डाटा आता है, तो समटाइम्स यू हैव डाटा इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड नंबर्स. तो फ्रीक्वेंसी होती है, फिर आप उसकी इजीली परसेंटेज निकाल लेते हैं. फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आता है तो आप उसको काउंट कर सकते हैं, क्या इतनी फ्रीक्वेंसी का 10 है, 15 है, 20 है, तो आपको पता चल जाएगा कि 20 मेंबर्स हैव रिपोर्टेड इन दैट सर्टेन वे. तो उसमें फिर आपके लिए इजीली आप उसको कर सकते हैं. लेकिन अगर कैटेगोरिकल फॉर्म में ना हो तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू काउंट द वैल्यूज. Continuous variable can take on an unlimited number of values between the lowest and highest points of measurement. When you measure a concept or a variable while in the given range you have decided to do, so you will find unlimited number of values because you are measuring the continuous variable. तो वो जो continuous variable की वजह से कि वैल्यू जो है वो अनलिमिटेड होंगी, उसके जिस तरह डिस्क्रीट में होता है कि आपके पास लिमिटेड वैल्यूज हैं और आप उनको काउंट कर सकते हैं, उस तरह नहीं होंगी वो वैल्यूज उस रेंज में. जो हाईएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट वैल्यू उनके बिटवीन जो होगी वही होगी वैल्यूज, उससे एक्सीड नहीं करेगी, आउटलाइन में नहीं होगी, लेकिन वो होगी अनलिमिटेड नंबर ही होंगे वैल्यूज के. Continuous variable includes such things as speed and distance. Distance, speeds are the best example of continuous variable. तो आप देख लें डिस्टेंस और स्पीड में आपके पास अनलिमिटेड वैल्यूज आती हैं. मतलब ये नहीं कि आप कहते हैं जी डिस्टेंस इतना खत्म हो गया, स्पीड इतनी खत्म हो गई. Sometimes continuous variable are measured and counted forever, or in some situation you have to count the values of concept or something forever. जैसे एज है तो अब एज को तो आप हर वक्त काउंट करेंगे ना, जैसे हर साल काउंट करेंगे, हर साल उसमें चेंज आएगा, उसको मेजर करेंगे, उसको देखेंगे अभी कितनी एज है, अब कितनी है, वेट को मेजर करते हैं. तो ये कंटिन्यूस वैल्यूज आपके पास आती रहती है. Operational definition. An operational definition is a procedure for measuring and defining a construct or a variable. So researcher, when he or she decides to examine and investigate a construct or a variable, so first he should define it properly. A researcher is responsible to describe the procedure of measuring that specific construct for the study. तो ऑपरेशनल डेफिनेशन बेसिकली वो प्रोसीजर होगा, वो तरीका होगा जिससे आप जो है एक वेरिएबल को कंस्ट्रक्ट को डिफाइन भी करेंगे और उसको मेजर भी करेंगे. प्रोसीजर्स whereby the concept is defined solely in terms of the observable procedure used to produce and measure it. So researcher should define the concept in a way that make it easy to be tested during the study using observable procedure. क्या मतलब ऐसे observable procedure, ऐसे procedure के जरिए आपने उसको करना है कि जो पता चले कि हाँ ये मेथड है, इसके जरिए हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. कि आप हिडन चीजों को तो उस तरह नहीं कर सकते. तो हिडन जो कहते हैं कि नीचे हिडन एक चीज है और आपने उसको सरफेस पे लेकर आना है, तो हाउ विल यू ब्रिंग इट ऑन द सरफेस. तो वो उसको ऑब्जर्वेबल कैसे बनाएंगे. तो आपने ऐसा प्रोसीजर यूज करना है कि थ्रू विच यू मेक योर कंस्ट्रक्ट ऑब्जर्वेबल फॉर ऑल. तो इसके अलावा उसको मेजर कैसे करेंगे, तो मेजर करने का भी आपने एक मेथड जो है वो यहाँ पर बताना है, और ये ऑपरेशनल डेफिनेशन कहलाती है. Conceptual and operational definition. Some researchers write both conceptual and operational definition in the research paper, while some prefer to write only operational definition in their paper. So both styles are appropriate, and we shouldn't raise any objection if someone has written or mentioned only operational definition of the selected construct or variable. So if you write conceptual definition along with operational definition, so then it will be appropriate for you, and you can also write only operational definition. So it's up to the researcher how he what does he like to present in the paper, and how he or she mention define and describe the
procedure of measuring the variable. So, here you can see the style of writing both type of definition here. First, writing conceptual definition. You can see here a definition of family perception. That family perception is a construct as researchers select for the study. So, how if a researcher has investigated family perception in his or her study, so how he will write the conceptual definition of that. So you see here, family perception refers to how people view of the family functioning across number of domains. Paul 2007. So Paul in 2007 has defined the construct family perception, and at the time of developing a questionnaire to measure the family perception. So whenever you use a measure, you also you are required to write the conceptual definition as proposed by the author of the questionnaire you have selected for the study. तो जो मेजर आपने सेलेक्ट किया होगा ना, आप उसी की डेफिनेशन उसी ऑथर की बताएंगे, आप इधर उधर से नहीं देखेंगे डेफिनेशन। पर फैमिली परसेप्शन पर तो बहुत सारे लोगों ने बात की होगी, लेकिन आप डेफिनेशन किसकी लिखेंगे? जिसका आपने स्केल किया है। अब यहाँ पे पॉल 2007 इनकी पॉल की क्यों डेफिनेशन मेंशन की गई है? क्योंकि रिसर्चर ने इन्हीं का मेजर जो है वो अपने रिसर्च के लिए यूज किया है। आप जो कंस्ट्रक्ट मेजर करने के लिए, जिस कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए जो सा स्केल लेंगे, आप उसी स्केल उसी ऑथर की, जो स्केल का ऑथर होगा जिसने जो डेवलप किया, उसने जो डेफिनेशन बताई है, यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन दैट डेफिनेशन हियर। एंड you can also write the operational of the definition of the same construct or variable in this study में ये researcher अपनी study की बात कर रहे हैं कि family perception will be defined and measured using family perception scale। अब जो researcher ने family perception को study किया है अपनी research में, इस variable को ने पहले conceptual definition लिखी है, इसी के बाद उन्होंने बताया है कि वो उसको measure कैसे करेंगे। तो family perception को जो measure किया है वो रिसर्चर ने, ये जो फैमिली परसेप्शन स्केल है जो डेवलप किया है पॉल ने, इसकी हेल्प से रिसर्चर जो है वो अपनी स्टडी में फैमिली परसेप्शन को डिफाइन भी करेगा और मेजर भी करेगा। यानी आप जो वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे उसको जब आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे कंसेप्चुअल, तो आप वही लिखेंगे जो स्केल आपने चूज किया है, और उस ऑथर ने जिस स्केल के थ्रू उसको मेजर किया है, you will use the same questionnaire to measure the variable। तो फिर आप वही यहाँ पर लिखेंगे। तो ये दो तरीके हैं किसी भी वेरिएबल कंस्ट्रक्ट की डेफिनेशन को लिखने के। You can write the both definition and any one of them, और any one of them में भी जो है वो आप चाहे तो इसको कंबाइन करके भी आप लिख सकते हैं। Now students, this is a class activity. A researcher wants to examine the impact of noise on student attention during class. So what kind of extraneous variable does he or she needs to control and how? So researcher is going to study the impact of noise on students attention, कि किस तरह student की attention जो divert हो जाती है अगर noise जो है वो क्लास में होगा, during class होगा। तो कौन सा extraneous variable है कि जिनकी help, जिनको control आपको करना जरूरी है उस study को करते हुए, so that you can determine the direct relationship of noise with attention, students attention। तो वो extraneous variable है, you first identify the extraneous variable and then you have to describe the way you will have control the extraneous variable in order to reduce their influence on your findings। So students, you have 15 minutes to complete that task.